calculate the radius of Bohr's fifth orbit of hydrogen atom. चलो derivation आपने की हुई है. Question है calculate the radius of Bohr's fifth orbit of hydrogen atom. So you know radius of nth orbit is, बोलो याद है, 0.529 into n square over z angstrom or 52.9 into n square over z picometer. So बताओ what is the radius of Bohr's fifth orbit of hydrogen atom. ये इसने कोई लिखा नहीं कि किस यूनिट में, तो let us take in angstrom. तो देखो radius of fifth orbit of hydrogen atom. So you know for hydrogen atom z is 1 and as it is fifth orbit n is 5. So 0.529 into 5 square divided by 1. That is 0.529 into 25 and it comes out to be 13.225 angstrom. What is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom in n equal to 6 drops to the ground state. चलो करो, do it fast. मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन जो है इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2. ठीक है. नाउ यू नो n इज 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2. So 6 into 5 over 2 means 50. Okay, or if you go like this, n equal to 6, n equal to 5, n equal to 4, n equal to 3, n equal to 2. These are the various lines. So n is equal to 4, it can be 6 to 5, 6 to 4, 6 to 3, 6 to 2, 6 to 1. Means how many lines? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines. Right? Now, n equal to 5. 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2, 5 to 1. Means 4 lines. 4 to 3, 3 to 2, 4 to 2, 4 to 1 means 3 lines. 3 to 2, 3 to 1 means 2 lines. 2 to 1 means 1 line. So how many lines? 5, 4, 3, 2, 1. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 9, 12, 13, 14, 15. These are the 15 lines. But there is no need to calculate like this
because already given calculate only what is maximum number of lines. They don't need any explanation. Okay, so just apply the formula. Okay, and if you would like to see how these 15 lines come, so it is like this. From 6 it can go at any level, 5, 4, 3, 2, 1. From 5 level electron can go from 4, 3, 2, 1, because emission line means when higher electron comes from higher level to lower level. 4 to it can come to 3 to 1. From 3 it can to 2 to 1, 2 or 1, and 2 to 1 only. So total lines 50. Question is how much energy is required to ionize a hydrogen atom if an electron occupies n equal to 5 orbit compare your answer with the ionization energy of hydrogen atom and energy required to remove the electron from n equal to 1 orbit. देखो पहले है इलेक्ट्रॉन 5th लेवल पे, तो उसको निकालने में कितनी एनर्जी यूज होगी, और दूसरी बार है इलेक्ट्रॉन 1st लेवल पे, तो उसके लिए कितनी एनर्जी यूज होगी टू रिमूव इट. आयोनाइज करना मतलब लिख लो आप आयोनाइजेशन क्या होती है. आयोनाइजेशन मीन्स removal of electron from the atom. इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर दो तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, रिमूव होके इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी का मतलब है when there is no attraction between the electron and the nucleus, right? So एक बार इलेक्ट्रॉन है 1 पे और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन है 5th लेवल पे. इन 2 लेवल पे इलेक्ट्रॉन है और उसको जाना कहाँ है, इन्फिनिटी पे. और इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी होता है, 0. सो एक तो 1 लेवल से यहां जो है उसको बोलेंगे आयोनेशन एनर्जी, है ना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1. और ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम की आपको पता है सबको, आप किसी भी यूनिट में लिख सकते हो, जूल पर एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो बच्चों आप लोग जो है क्या करना है आपको, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम. पहले इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n इक्वल टू 5 ऑर्बिट, और दूसरी बार उसको कंपेयर करना है किससे, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में हो. What is the energy of the electron in nth orbit? Energy of the electron in nth orbit. बोलो
what is the energy of electron in nth orbit of hydrogen atom in joule per atom. Energy of the electron in nth orbit is minus 2.18 into 10 raised power minus 18 over n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होता है, तो वो अब जेड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं. तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. राइट, तो ये जो है nth ऑर्बिट की एनर्जी है. अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, आयोनेशन एनर्जी है ना ऑफ हाइड्रोजन एटम when electron is in n equal to 5, फिफ्थ लेवल पे इलेक्ट्रॉन है. ठीक है ना. तो आयोनेशन एनर्जी होती क्या है, मैंने अभी बताया, लिख लो अगर नहीं पता है तो. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कंप्लीट रिमूवल, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली हटा देना है. तो हट के जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी पे. तो एनर्जी कितनी आएगी, E5 माइनस E, मतलब ये होगा E इंफिनिटी माइनस E5. राइट, और E इंफिनिटी कितनी होती है बोलो, 0. सो एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0. सो 0 माइनस E5, दैट मींस माइनस E5 ओनली. सो E5 means n is 5, so it is minus 2.18 into 10 raised power minus 15 divided by 5 square. So it becomes minus 2.18 into 10 raised power minus 15 over 25. So value comes out to be 8.7, sorry, minus 18, 8.7 into 10 minus 20 joule per atom. राइट, क्योंकि इसको 218 ले लेंगे into 10 raised to minus 20. सो ये आया आपके पास फर्स्ट लेवल के लिए. ठीक है, ये फिफ्थ लेवल के लिए. अब दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम when electron is in n equal to 1, फर्स्ट लेवल पे है. तो आयोनेशन एनर्जी अगेन इक्वल टू E infinity minus E1, and this is 0 minus E1 is equal to minus E1. So minus and it become plus, और E5 तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, है ना. ओके, सो प्लस 2.18 into 10 raised power minus 18 over 1 square joule per atom. Means simply it is 2.18 into 10 raised power minus 18 joule per atom. This is the value, right? So if we compare these ionization energies, then so this ionization energy can be written as ionization energy 5 and this is ionization energy 1. So ionization energy 5 divided by ionization energy 1 is equal to, see, this is simply 8.72 into 10 raised to minus 20 divided by 2.18 into 10 raised to minus 18, and this value you know it is 2.18 into 10 raised to minus 18 divided by 25. So this value comes out to be 1 upon 25, that is 0.04, right, 4 over 100. So this is the
comparative study that fifth ionization energy is equal to 0.04 times the first ionization energy. This is called first ionization energy. This is fifth ionization energy. Means simply if electron is from fifth level, then that 0.04 times the first ionization energy. That value is needed to remove it. Okay, that means if electron goes up, it is easier to remove. वैसे भी पता है कि अगर न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको रिमूवल क्या हो जाएगा? इजी. एक इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास है, दूसरा दूर है, so obviously this electron is difficult to remove and this electron it is easier to remove. एक्चुअली बोर्स मॉडल जो था ना, एक फर्स्ट सिस्टेमैटिक मॉडल था जिसने एनर्जी बता दी सेटिस्फैक्टरली, रेडियस बता दी, है ना, वेलोसिटी, वी हैव डिराइव्ड ऑल द रिलेशंस, राइट. बट उसकी पहली बात ये थी कि वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स. सो इट फेल्ड इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. पहली लिमिटेशन. दूसरा पॉइंट कि उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आता है, हायर से लोअर, जैसे 5 से 4, तो देयर इज ओनली वन स्पेक्ट्रम लाइन. बट एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, देयर आर मोर देन वन लाइंस. सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई दीज लाइंस आर देयर, है ना. फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थे, उसमें वो स्प्लिट हो रही थी. स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि व्हाई देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. स्पेक्ट्रल लाइन मींस वही एमिशन लाइंस, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. फिर ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो था, केमिकल बॉन्डिंग, ही कुड नॉट एक्सप्लेन. देन जो उसको बिगेस्ट ब्लो, मेजर जो ब्लो लगा, वो था अगली जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, डीब्रोगली इक्वेशन, डीब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. उन्होंने क्या बोला कि इसमें क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. पार्टिकल है और उसकी एनर्जी भी है, उसका रेडियस है, एक पर्टिकुलर लेवल है, और उसके बाद उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी है. तो इन्होंने बोला कि डीब्रोगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है. ड्यूअल मींस इट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव. ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो. और हेजनबर्ग ने बोला कि ये जो बोल रहा है ना फिक्स्ड ऑर्बिट, उसने कंसेप्ट ही ऑर्बिट का खत्म कर दिया. उसने बोला कि देयर इज नॉट फिक्स्ड पाथ्स, स्टेशनरी पाथ्स, देयर आर प्रोबेबल पाथ्स, देयर इज प्रोबेबिलिटी. उसने ऑर्बिट का कंसेप्ट को चेंज करके ऑर्बिटल कंसेप्ट पे ले आया. ये लिमिटेशंस हैं, मैं एक एक करके लिखता हूं, देन आई कुड एक्सप्लेन, राइट. फर्स्ट, तो उसके ही कुड सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, तो फर्स्ट था द थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन, द थियरी कुड नॉट explain the atomic spectra of the atoms, the atomic spectra of atoms containing more than one electron, or we can say multi-electron atoms.
तो फर्स्ट लिमिटेशन ये क्लियर हो गई कि ही कुड एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बताया ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, सॉरी लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, वो सारी सीरीज बताई थी ना, वो उसने हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन की, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम्स के लिए, बट उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरा, ओके, सेकंड इज बोर्स थ्योरी predict only, मैंने बताया था अभी, only one spectral line, only one spectral line for the electronic transition between two energy levels, ठीक है। उसने बोला कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल से आया और टू पे आया, फिफ्थ से टू पे, तो देयर इज ओनली वन लाइन, बट व्हेन दे केयरफुली एग्जामिन्ड देयर आर समटाइम्स मोर देन वन लाइन्स, ठीक है ना। तो वो मोर देन वन लाइन्स क्यों आई, है ना, क्योंकि उसने सिर्फ शेल की बात की थी, उसके अंदर सब शेल होते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, वो हम करेंगे आगे, वो उस तक नहीं पहुंचा था, दैट्स व्हाई ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो, है ना। सो उसने बोला कि हाउएवर इफ केयरफुली एग्जामिन्ड certain single lines are found to contain a number of finer lines, उसके अंदर भी और छोटी छोटी लाइंस होती हैं, है ना। तो बोथ है फेल टू एक्सप्लेन the fine structure of the spectral lines। फाइन स्ट्रक्चर उसका मतलब फाइन स्ट्रक्चर जो था स्पेक्ट्रल लाइंस का, उसको वो एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं था, मतलब he was not successful to explain why, कि उसने ये तो बता दिया, ये तो समझ गए ना कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए फेल हो गया। और मैंने जो बताया ना आपको कि फिफ्थ लेवल से मान लिया थ्री लेवल पे आया, तो उसने क्या बोला, देयर इज ओनली वन लाइन, बट एक्चुअली क्या होता है, जो शेल्स होते हैं ना, ये एनर्जी लेवल एक ऑर्बिट का, पर ऑर्बिट के मतलब शेल के अंदर भी देयर आर सब लेवल्स, लेवल के अंदर भी सब लेवल होते हैं, वहां तक ही कुड नॉट रीच, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ये सेकंड लिमिटेशन उसकी बन गई। ओके, नाउ थर्ड, third limitation is in the formation of line spectrum,
formation of line spectrum when the source emitting these radiations is subjected to the influence of electric or magnetic field, each spectral line is found to split into a number of lines. So splitting of spectral lines in magnetic field is called Zeeman effect. Zeeman effect is splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. Or Stark effect, splitting of spectral lines in the presence of electric field. ये splitting of spectral lines in the presence of magnetic field और ये Stark effect is splitting of spectral lines in the presence of electric field. डन. तो ये जो दो हैं Zeeman effect और Stark effect, it could not be explained by Bohr's model. ये उसकी नेक्स्ट लिमिटेशन थी. कई बार ऐसे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज Zeeman effect, तो आप लिखोगे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और Stark effect पूछेगा तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. ओके, ये हो गया. तो Bohr theory could not explain these effects satisfactorily. तो यहां भी ये fourth, Bohr theory failed to explain combination of atoms, shape of the molecules formed by the combination of atoms. क्यों दो एटम या तीन एटम कंबाइन होके ट्राइगोनल प्लेनर बना देते हैं, टेट्राहेड्रल बना देते हैं, वो शेप्स उसने कुछ उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी. मतलब केमिकल बॉन्डिंग जो है इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. ओके. देन फिफ्थ वन जो मैंने आपको बोला, द सीरियस ब्लो टू Bohr's model of atom came from certain new principles such as Debroglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle.
ये जो दो प्रिंसिपल थे, एक तो डीब्रोगली की जो हाइपोथेसिस दी उसने, और दूसरा हेजनबर्ग ने बोला, ये दोनों जो हैं ये तो he could not even reach up to that level, कि ये प्रिंसिपल उसके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को कंसिडर किया था। बट वो ये जो डीब्रोगली था इसने क्या बोला, इसके बाद यही करेंगे हम। डीब्रोगली ने बोला कि देयर इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर जो है उसका कैसा नेचर होता है, ड्यूअल। ड्यूअल मींस इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। और जो दूसरा था कौन, हेजनबर्ग, अनसर्टेन प्रिंसिपल के थ्रू बोला उसने कि there are no fixed path, जो पहले बोला था कि there are fixed path, rather there are probable path for electron, probable paths for electron in an atom। अगर आपको मान लिया 2 मार्क्स में आता है, मैंने डिटेल में इसलिए लिखवाया कि इसमें से आप अपनी तरफ से अच्छे से लिख लो, अदरवाइज क्या लिखना है आपको, देखो फर्स्ट कि ही फेल्ड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, खत्म हो गया पहला पोस्टुलेट। दूसरा कि जो लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, there is a single line according to Bohr's, but there is more than one lines. Final इतना लिख दो, he could not explain, चलो मैं लिख ही देता हूँ। अगर आपको मान लिया शॉर्ट में लिखना हो ये सारा, है ना, मैंने डिटेल में इसलिए लिख दिया ताकि ऐसा ना हो मैं शॉर्ट लिखूं आप उससे भी शॉर्ट कर दो एग्जाम में ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो फर्स्ट लिखोगे कि Bohr theory could not be applicable to multi-electron atoms। ठीक है। दूसरा, he could not explain fine structure of atoms। तीसरा, he could not explain the Zeeman effect and Stark effect। He could not explain shape of molecules। फिर he could not explain Debroglie equation and Heisenberg uncertainty principle। That's it तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। वो मैंने आपको डिटेल में इसलिए लिखवाया ताकि अगर मान लिया आपको वो सारा पढ़ लोगे तो यू हैव एन ओवरव्यू, है ना, तो आप कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख दोगे। बट सिर्फ यही लिखा होगा और आप यही भूल गए कि व्हाट इज ज़ीमैन इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
Stark effect, splitting of spectral lines in the presence of electric field. ठीक है ना, इसलिए मैंने डिटेल में लिखा, अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस ओनली. नाउ नेक्स्ट इज डी ब्रोगली इक्वेशन. देखो डी ब्रोगली इक्वेशन में डी स्मॉल है ना, और ब्रोगली का बी कैपिटल है. ठीक है, आई थिंक जर्मन लैंग्वेज ऐसा होता होगा, है ना, तो ये याद रखना. ठीक है, ओके. सो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? एक्चुअली डी ब्रोगली जो है ना, वाज हाईली इंस्पायर्ड पर्सन. उसने देखा कि जब लाइट जो है, लाइट, आइंस्टाइन ने बता दिया था कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर. लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, है ना. तो जब आइंस्टाइन का उसके कंसेप्ट आया तो उसने बोला व्हाई नॉट इट इज एक्सटेंडेड टू पार्टिकल. इफ लाइट हैज ड्यूअल नेचर देन व्हाई नॉट पार्टिकल हैज ड्यूअल नेचर. सो ही कंटिन्यू टू हाइपोथेसाइज. तो उसने हाइपोथेसिस दी, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. देखो उसकी सोच, मतलब वो कितना दूर तक सोचता होगा. उसने हाइपोथेसिस दी, इसलिए कई बार यहाँ लिखा होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस होते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, थीसिस नहीं लिखी है पूरा, आपने सिर्फ सोचा और वो अपने पेन पेपर लेके लिख दिया. समझ रहे हो, मतलब थियोरी दी, थियोरेटिकल कंसेप्ट दिया उसने. और कंसेप्ट क्या था कि जस्ट लाइक light, particle has dual character. और फिर उसने बताया if m is mass of particle and v is speed of particle, v क्या है, speed of particle, then wavelength of the wave associated with particle. Keep in mind, this wave is associated with particle. It is not emitted by the particle. Wavelength of the wave associated with the particle and is called as the particle, that is lambda equal to h upon mv. And you know m into v, momentum, so that is h over p. That implies lambda is inversely proportional to p. Lambda gives us wave nature and momentum gives us particle nature. That implies wave nature of the particle is inversely proportional to its particle nature. But this wave associated with the particle is not an electromagnetic wave. The wave associated with the particle is the wave associated with the particle is called matter wave or de Broglie wave. That is called matter wave or de Broglie wave. So simply हम उसको बोलते हैं matter wave. और wave nature is represented by lambda, wavelength, and particle nature by momentum. So lambda equal to h upon mv
और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. p is momentum. p is actually momentum of particle. ओके, ये रिलेशन समझ में आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. इस रिलेशन को फर्दर और एक्सटेंड करते हैं. देखो, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो है, इसको नंबर 1 दे दो ना, इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई एम ऑन बोथ साइड्स, दैट इंप्लाइज m square v square equal to 2 into m into kinetic energy. Means m into v जो है that is square root of 2m into kinetic energy. So lambda equal to h upon mv, h upon square root of 2m into kinetic energy. So if kinetic energy is given, you can go with this relation. Okay? Now, if an electron is there, if an electron is accelerated by a potential difference of v volt, then kinetic energy is equal to E into V. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, है ना. तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m EV. E is the charge on the electron and V is the voltage, potential difference, right? इसको Q भी ले सकते हो आप, right? So you know h is 6.626 into 10 raised power minus 34 joule second. M is 9.11 into 10 raised power minus 31 kg. E is charge on the electron, magnitude of the charge है ना. तो 1.602 or 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. If we put the values, then lambda comes out to be 12.27 divided by V angstrom. This is also very important relation. This is applicable for electron only. So अब इस पे हम नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल करेंगे और पहले इसका पूरा डी ब्रोगली इक्वेशन का बाकी डेरिवेशन ये वो सब करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. बट ये डी ब्रोगली इक्वेशन का पूरा आ गया आपके पास. ठीक है.